Okay, so let us now start by talking about the phylum Chordata. So when we say the word Chordata, we are actually referring to the organisms that have, so it is made up of two words here, chord and eta. Both of them are Greek words, Greek origin. Chorde as in a string or a chord, and eta is for bearing. So when we are saying chordata, we are talking about some organisms that bear a specific type of chord. What specific type of chord are we talking about? We're talking about a supporting structure which we call as the notochord. So every chordate, every single chordate, जितने भी सारे organisms जिनको हम chordates की तरह identify करते हैं, they will have this notochord. A chord, notochord, which is going to be present in them. अब ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरी लाइफ परसिस्टेंट रहे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट रहे, ठीक है. बट इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री, लाइफ पूरी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी पार्ट में ये नोटोकॉर्ड जो है उसकी प्रेजेंस रहेगी, एंड दिस विल आइडेंटिफाई दैट वेदर वी आर कॉलिंग an organism as a chordate or a non-chordate. So when we are talking about chordates, we are talking about organisms that have a supporting structure, a rod-like structure, which is called as the notochord. Now, again, this is also made up of two words. Chord, we know, string, and noto is a back. So it's like a back chord, which is present on the back side. So we'll talk about it. Now, these chordates are then divided into several parts. So the chordates can be two types. So they can be protochordates, and in protochordates, we talk about two different type of organisms. So there are urochordates and cephalochordates. पहले हेमिकॉर्डेट्स भी इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर आता था, बट नाउ हेमिकॉर्डेट्स हैज बीन शिफ्टेड टू द इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में पहले माना जाता था कि एक छोटी सी कॉर्ड होती है, बट अब वो कॉर्ड जो है इट इज फाउंड दैट इट इज नॉट सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, सो दैट इज व्हाई वी हैव pushed it back to the invertebrates. Now in protochordates, you have just two urochordates. Somebody who has a cord in the uro tail, and others who have a cord in their head region, cephalic region. Okay, so that's how we've identified protochordates, initial chordates, the ones that were first ones to be called as chordates. And then another set of organisms, another set of subphylum, which is known as vertebrates. ठीक है, और ऐसे लूजली थोड़ा समझाने के लिए बता दूं तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. देयर आर लोअर वर्टिब्रेट्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स. तो लोअर वर्टिब्रेट्स में आपके दो, यस. In the tail and head part, you told the notochord is present in uro and cephalochordates. Yes, okay. Yes. So the chordate, so they are uro as in tail, and the chord that I was talking about, notochord, which is present either in the tail region or in the head region. Okay. All right. In vertebrates, there are two types, two kinds. Lower vertebrates, जिसमें हम रखते हैं अपनी fishes और amphibians को. ठीक है. एंड हायर वर्टिब्रेट्स, अब यहां से हम कंसिडर करेंगे उन वाले वर्टिब्रेट्स को जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंड पे रहते हैं. ठीक है, तो द वंस दैट हैव मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड, बट देन
there are some exceptions that I'll come to. So there are reptiles. Of course, अब आप बोलोगे कुछ water snakes भी होते हैं, तो like I said, there are exceptions, but majority of the reptiles are land dwelling, terrestrial. ऐसे ही birds, तो कुछ water birds भी होती हैं जो पानी के आसपास रहती हैं, but there most of them are terrestrial, and same is the case with mammals. ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नो कि कुछ बड़ी वेल्स होती हैं, सब होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर terrestrial. So they are divided based on, they're called as lower and higher vertebrates. So there are some features जिनके बारे में हम बात करेंगे कि हमने क्यों इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया है. So now what we're going to do, we're going to talk about a bit about its general characteristics. क्या कौन कौन से organisms chordates में आते हैं finally. तो एक चीज हमें पता चल गई कि नोटोकॉर्ड जो है, इस फाइलम में, कॉर्डेट फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी. ठीक है. दूसरा एक और चीज है, कॉर्डेट्स जो हैं इनके नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं दे आर एक्चुअली वेरी लेस. ठीक है. सो दे डू नॉट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है थोड़ी सी हैं, करीबन 49,000 या 50,000 स्पीशीज जो हैं कॉर्डेट्स की हमें पता है आज तक. जबकि आर्थ्रोपोड्स जो हैं या इंसेक्ट्स जो हैं उनकी कितनी करोड़ों तरह की स्पीशीज हैं जितनी हमें पता भी नहीं. राइट. सो इन कॉर्डेट्स यू हैव approximately 50,000 of species, 49-50,000 of species that we know. Still, chordates जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं अर्थ पे, है ना. क्यों, ऐसा क्यों है? एक तो हमने बताया कि कम स्पीशीज हैं, पर ये स्पीशीज जो है बहुत ही ज्यादा विजिबल हैं. विजिबल इन द सेंस क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा कवर करती हैं. दे आर जनरली लार्ज बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, है ना. आप एक पर्टिकुलर रूम में कितने सारे इंसेक्ट्स भर सकते हो, ऐसी मैमल्स कितने भर सकते हो, है ना. तो द मैमल्स दे आर एक्चुअली मीडियम टू लार्ज बॉडी साइज. सो द कॉर्डेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे जनरली हैव अ मीडियम टू लार्ज बॉडी साइज. इनफैक्ट जो सबसे बड़ा, द बिगेस्ट नोन एनिमल is called as the Antarctic blue whale. Antarctic blue whale. Its scientific name is Balanoptera musculus. Balanoptera musculus. And it can reach up to approximately 98 feet of length. So it's huge. 98 feet तक ये लेंथ में जा सकती है. And it can weigh approximately 400,000 pounds. या फिर केजीज में बोलूं तो it weighs approximately 1.8 lakh kgs. So that's too much. That's almost like 33 elephants standing together. ठीक है. So it's a huge organism, Antarctic blue whale, and now it falls under the chordate. ऐसी एक और चीज है जो हमें याद रखनी है. जैसे हमने सबसे लार्जेस्ट मैमल की बात की, वैसे ही एक स्मॉलेस्ट फिश जो है उसका भी नाम हमें याद रखना है. So the smallest fish is called as a dwarf minnow, and the scientific name is Pedocypris. CYPRIS. Pedocypris. It is approximately 8 mm in length. छोटी सी होती है बहुत ही. ठीक है. But still 8 mm is still visible, right? It's a small fish but still visible, as opposed to majority of chordates जो होते हैं आपके, वो they are huge body size. Okay. So this we've made a point that okay, the chordates have a huge body size. और क्या प्रॉपर्टीज है कॉर्डेट्स की जो याद आ रही हूँ जिसकी वजह से वो, जिनको हम कह रहे हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं?
So when I say that the chordates are actually most successful, that is because of a few reasons. For example, they are adapted to different modes of existence, and जो हमारे chordates हैं उसमें जो major chunk of organism है, they are birds and mammals. और दोनों ही birds और mammals जो हैं, ये आपके warm blooded animals होते हैं. और इनके वार्म ब्लडेड होने का फायदा क्या है कि अब दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. बर्ड्स और मैमल्स जो है वो ऐसी ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो सकती हैं. काफी गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, काफी ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड. उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, चेंज नहीं करता. तो इस वजह से दे कैन पेनिट्रेट into harsh climatic conditions. ठीक है? तो हम डिफरेंट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब हम अलग अलग रिसोर्सेज पे जिंदा रह सकते हैं. बी अदर मैमल्स, वी आर वेरी अडेप्टेबल टू डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस. प्लस जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं वो सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर दीज टू रीजंस the chordates are considered as most successful organisms on earth. All right. So now there are a few things that we should remember before we move on to talking about vertebrates, and that is chordates जो हैं उनको क्या हम सिर्फ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे या फिर कुछ और भी ऐसे फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली chordates में मिलते हैं. तो जो chordates हैं उनमें टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. 3. क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? That they have a dorsal, hollow, or you can say tubular nerve cord. ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नोटोकॉर्ड येट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नर्व कॉर्ड. और कैसे याद रखेंगे? या इसको ऐसे याद रखेंगे कि ह्यूमंस में डी फॉर डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है? दिस डॉर्सल नर्व कॉर्ड ठीक है, इज प्रेजेंट जहां पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है. वी फॉर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है? तो हमें ऐसे याद रखना है इसे कि जो पीछे वाली साइड, जो पीठ वाली साइड है, दैट इज डॉर्सल. ठीक है? भले ही ऐसा लग रहा है कि अच्छा व्हेन आई से दैट जो वर्टिब्रल कॉलम है वी से तो वेंट्रल साइड पे होनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस. इट इज उल्टा हियर. The nerve cord, the dorsal nerve cord is actually present near the V for vertebral column. That's how we're going to remember it. ठीक है? कि मेरी dorsal nerve cord vertebral column के पास present होती है. ठीक है? So all the chordates, this is just for you to remember. So all the chordates have a dorsal tubular nerve cord. Second, they have a rod-like structure, like I said, a supporting structure, notochord. And third, they have a series of pharyngeal gill slits. ठीक है?
तो 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉर्डेट्स को कॉर्डेट बनाते हैं. इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे. These are the 3 questions that you ask. That does this animal have a tubular nerve cord? Does this animal has a notochord? Does this animal has a series of pharyngeal gill slits in any time of its life? ठीक है? These are the 3 questions that you ask, and if everything is yes, 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 then you classify it as a chordate. ठीक है? So we'll start talking about the first thing, which is your the dorsal nerve cord. ठीक है? So in case of chordates, the central nervous system is present on the dorsal side, and you can see it is expanding lengthwise. ठीक है? तो लेंथ वाइज सिर्फ टेल और अपेंडेजेस वाले रीजन्स को छोड़ दें तो हमारी जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है हेड से लेके शुरू होके ऑलमोस्ट टेल रीजन तक लेंथ वाइज एक्सटेंड हो रही है. ठीक है? It is the central nervous system or the dorsal nerve cord that I'm talking about, which extends lengthwise on the dorsal side, back side. This is the back, okay? And this is the belly region. That's how you remember it. Now, make sure that I'm telling you that this nerve cord is hollow. ठीक है? hollow है तो इसके अंदर एक cavity present है. मतलब that cavity is called as the neurocele cavity. ठीक है? जो ब्रेन के अंदर तो बाद में वेंट्रिकल्स बनाती है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल की तरह नाम से जानी जाती है. ठीक है? क्या भरा होता है इस खाली वाली कैविटी में? Any guesses from the group, from the audience? ब्रेन के अंदर. Perfect. So the cerebrospinal fluid is actually filled in this cavity. ये जो खाली cavity, जो neural seal है हमारी, जो इस dorsal nerve cord के अंदर खाली जगह है, that space is filled with the CSF, the cerebrospinal fluid. ठीक है? तो ब्रेन के अंदर जो आपका जो इंटीरियर रीजन है इसका, जो लेटर ऑन ब्रेन बनाता है, उसके अंदर वेंट्रिकल्स जो खाली स्पेसेस होते हैं वहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड बाकी पूरी बॉडी में रन कर रही होती है उसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल, एक बीच में खाली स्पेस होती है जिसके अंदर आपका पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है. ठीक है? So that particular part is taken care by the neurocele. So your dorsal nerve cord encloses, let's write this down, dorsal nerve cord encloses a cavity called as the neurocele. Called as the neurocele. ठीक है? All right. One more thing. The anterior region of this dorsal nerve cord will develop as brain, and the posterior region will develop as the spinal cord. The anterior region will develop as the brain and the posterior region will develop as the spinal cord. Now, if you look here in this diagram, there's another structure. This is the notochord. The notochord. Now, this notochord is beneath, it's just present just beneath this nerve cord. ये जो nerve cord run हो रही है उसी के just नीचे present है. And it is right above the digestive canal. ये वाला जो है आपका digestive canal है. तो it is sandwiched between the nerve cord and the digestive canal.
एक और चीज है, इसके अंदर ये कुछ बबल जैसे मैंने सेल्स बनाए हैं. सो द नोटोकॉर्ड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ vacuolated notochordal cells. So these cells are basically, it's like a cushion. ठीक है, बहुत ही जिलेटिनस, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, जेल की तरह काम करते हैं. खूब सारे वैक्यूल्स आर बेसिकली एयर स्पेसेस. ठीक है, जो आपकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर बहुत सारे वैक्यूल्स हैं तो वो वाला सेल जो है, इट विल फॉर्म अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. तो जो नोटोकॉर्ड है सॉलिड स्ट्रक्चर है, बट इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज द सेल्स have vacuoles. So it's a vacuolated notochordal cell which contains gelatinous matrix. ठीक है, सो अब हम समझ सकते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक कुशन की तरह काम कर रही है आपके नर्व कॉर्ड के लिए, नर्व कॉर्ड को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. सो इट इज वर्किंग एज अ कुशन. अडल्ट लाइफ में यही पार्ट नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है. सो इन अडल्ट लाइफ दिस नोटोकॉर्डल पार्ट is replaced by the vertebral column. All right. So in the adult part, this particular notochord will be replaced by the vertebral column. Now let's label the rest of it. So if this is the mouth. Please use a different pen. It's getting confusing. Okay. I don't know if you're able to see the red one. Yes, ma'am. All right, perfect. So the next characteristic that I'm talking about are these. These are called the pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. अब pharynx कौन सा part है? So let's assume that the region right behind my nose and mouth, नाक और माउथ के जस्ट पीछे एक छोटा सा लूप होता है जो आपकी ईसोफेगस से कनेक्ट करता है. सो इट्स बेसिकली this particular structure. So let's say if this is the nostril, yeah, this is the mouth. You have so the nasal passage and the passage from here, they are connected and they then go and bind to the esophagus. So this is the region that we are talking about. This is the pharynx. ठीक है, pharynx जो है आपका नोज और माउथ से जो पाथ जा रहा है उसको आपके लेरिंग्स और ईसोफेगस से कनेक्ट करता है, वॉइस बॉक्स और ईसोफेगस से. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर मैं अपनी बॉडी में लोकेट करने की कोशिश करूं तो जस्ट नेक के जस्ट हल्का सा ऊपर यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. और इन गिल स्लिट्स का क्या काम है? दीज स्लिट्स आर बेसिकली दे कंप्राइज ऑफ गिल्स ऑन द साइड. यहाँ पे गिल्स हैं और ये उन गिल्स की ओपनिंग्स हैं. अब गिल्स का क्या काम है? वी नो इन द फिशेस that they're going to be used as the respiratory organ. So in any part of my life, for example in humans, before we are born, so we have a set of gill slits that allow us to breathe even when we are dip into the fluid. हम लोग एक fluid के अंदर, amniotic fluid के अंदर present होते हैं. So in that small part fraction of our life, we have some gill slits that are present. ठीक है, so these are the pharyngeal गिल स्लिट्स. सारे कॉर्डेट्स में किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ में ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे. ऑलराइट, ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? एवरीथिंग इज गुड सो फार? Yes, ma'am. Alright. Now let's just quickly talk about a few more chordate features जिसकी वजह से वो they've become what do you say, they've become more advanced. For example, the first thing is that they have a living endoskeleton. ठीक है, तो
जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो स्केलेटन मटेरियल होता है, दे हैव टू शेड इट ऑफ रेगुलरली ताकि वो ग्रो कर सके. Chordates में, however, we have a living endoskeleton which it keeps on growing with the rest of the body. ठीक है, so it can keep on growing. तो हर बार थोड़े थोड़े दिन बाद उस पूरे skeleton को shed off करने की जरूरत नहीं है. We can keep on growing that same endoskeleton that we have. It keeps on growing as we grow. ठीक है, इसी वजह से जो organisms हैं, they are allowed, they have chances of free movement and indefinite growth. जैसे मैंने अभी बताया that there is a huge blue whale that can grow up to such long as 98 feet. तो उसका एंडोस्केलेटन जो है, उसकी बॉडी की जो बोन स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अलोंग विद इट एंड दे आर सपोर्टिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस लिविंग एंडोस्केलेटन एक्चुअली प्रोवाइड्स, गिव्स यू रूम फॉर इंडेफिनिट ग्रोथ. सो दैट इज हाउ जो कॉर्डेट्स हैं, दे कैन बी लार्जर ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल वर्ल्ड. मैम, एनिमल्स में हमारे पास डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती, तो इनडेफिनेट कैसे, समझ नहीं आया. जैसे कि अब तुम अपना एग्जाम्पल सोच रहे होगे कि ह्यूमंस तो एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद तो नहीं ग्रो करते, है ना. क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में बचपन में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो बोन्स जो हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग, पर इस ग्रोथ को रेगुलेट कर दिया जाता है बाय दी ग्रोथ हार्मोन. अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिर्फ रिपेयर का काम करता है एक टाइम के बाद, उसके बाद वो ग्रो नहीं करता. ठीक है, बट देर आर अदर मैमल्स एंड अदर कॉर्डेट्स जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो कंटिन्यूसली सिक्रिएट होता रहता है. ठीक है, तो हमारी भी बोन्स जो हैं, उनको अगर बाहर से जो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोवाइड किया जाए तो इट कैन शो ग्रोथ, इंडेफिनिट ग्रोथ. पर हमारा मैकेनिज्म ऐसा है, हमारी फिजियोलॉजी ऐसी है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, लेटर ऑन इट इज मॉडिफाइड और अब वो सिर्फ रिपेयर का काम करता है हमारी बॉडी में. ठीक है, मैम, बाकी एनिमल्स एक डेफिनेट टाइम तक ही ग्रो करते हैं ना, अपने अपने अकॉर्डिंग साइज के. उनका कौन सा होता है कि पूरी लाइफ चलता है. हाँ नहीं, पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन की ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं कम हुई, क्योंकि सिग्नल आना बंद हो गया ऊपर से, इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई. ठीक है, ओके मैम. पर ये जो बोन्स हैं, दे कैन स्टिल इंडेफिनेटली ग्रो. ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फिजियोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि ये जो ग्रोथ का सिग्नल होता है ब्रेन का, वो एक टाइम तक ही सिक्रिएट होता है, फिर बंद हो जाता है. क्या, do you get it now? Yes मैम, थैंक यू. Okay. So the second very important point that makes us so efficient and advanced is we have an efficient respiration as well as circulation. ठीक है, तो ब्लड जो है हमारी बॉडी का, इट कैन डायरेक्टली एफिशिएंटली फ्लो थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. उससे क्या होता है, बहुत ही रैपिडली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी जो है, वी कैन ट्रेन इट फॉर दैट. ठीक है, देयर आर मैमल्स जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक बहुत एक्टिव रह सकते हैं, है ना. एनिमल्स जो बहुत ज्यादा जो स्प्रिंट करते हैं, एनिमल्स जो बहुत तेज दौड़ते हैं. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्रेन्ड इट, और इतनी ज्यादा स्पीड में रन करने के बावजूद हमारी बॉडी जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको कंटिन्यू रख सकती है. तो दैट हैज क्रिएटेड अवर एफिशिएंसी, क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो है बहुत ही एफिशिएंटली और फ्रीली फ्लो कर सकता है. नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है, हमें बाहर से सिर्फ एयर पंपिंग चाहिए, उसके बाद बाकी काम हमारी बॉडी में अंदर खुद हो जाता है. तो क्विक सर्कुलेशन है, क्विक रेस्पिरेशन है. So that makes it very efficient. Plus, a very important thing is a centralized nervous system.
इनवर्टिब्रेट्स में जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इफ वी लुक एट द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है ना। पहले कुछ गैंग्लियंस होते हैं अलग अलग रैंडमली कहीं कहीं प्रेजेंट, उसके बाद वो जो है एक नर्व कॉर्ड की फॉर्म ले लेते हैं अर्थवर्म में, जैसे हम देखते हैं कि अच्छा है कुछ एक नर्व कॉर्ड सेंट्रल में आ गई है, कुछ सेरिब्रल गैंग्लियन जैसा कुछ डेवलप हो रहा है। कॉर्डेट्स तक पहुंचते पहुंचते ये प्रॉपर हो जाता है। वी हैव 100% फुल प्रूफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग एक जगह पे होगी और बाकी सारी बॉडी का काम क्या है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। ठीक है, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज अवर एफिशिएंसी टू फंक्शन। सो दैट्स हाउ दीज आर अनदर 3 फीचर्स दैट हैव मेड अस वेरी एडवांस्ड एज अपोज टू अदर फाइला। ठीक, right. So now I'm moving to the subphylum vertebrate. Like I said, हम लोग आज vertebrates के बारे में बात करना शुरू करेंगे। Excuse me, ma'am. Yes, please. मैम आई एम आस्किंग कि जो अभी आपने लिविंग एंडोस्केलेटन में एक पॉइंट बोला था फ्री मूवमेंट, जी, तो फ्री मूवमेंट किस सेंस में है यहाँ पर? फ्री मूवमेंट इन द सेंस जैसे कि अब आप लोअर ऑर्गेनिज्म से खुद को कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कई बार स्केलेटल मटेरियल जो होता है वो इतना रिजिड होता है दैट दे कैन शो ओनली सम अमाउंट ऑफ मूवमेंट। जैसे बहुत सारे क्रैब्स और बहुत सारे स्मॉलर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना हेड जो है बहुत ही लिमिटेड मूव कर सकते हैं, आगे सिर्फ थोड़ा सा मूव कर लिया, हल्का सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, बट इन chordates, because you have this free vertebral what do you say axis vertebra and atlas, you can move your head up to 270 degrees। ठीक, आप बड़ा व्यू ले सकते हो। Similarly with your hands and your feet, you have a freedom of movement to move around। ठीक, एज अपोज टू जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्योंकि जो स्केलेटन है वो ग्रो नहीं कर रहा बॉडी के साथ, है ना, इस वजह से उसमें मूवमेंट जो है वो भी बहुत लिमिटेड रहती है। दे कैन नॉट शो ड्रास्टिक रैंडम मूवमेंट्स। ठीक है जी। if you have if anybody has any other doubts so far, just quickly ask before I move to the subphylum vertebrates। Okay, ठीक है। So now we're going to talk about vertebrates। Now in this vertebrates, so हमने पहले थोड़े chordates के बारे में बात की और chordates के एक जनरल फीचर्स हमने थोड़ा समझे कि अच्छा ठीक है फ्री लिविंग होते हैं, they have what do you say, they have 3 characteristic features कि उनमें notochord present होनी चाहिए, dorsal nerve cord present होनी चाहिए, उनमें pharyngeal gill slits present होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने कुछ और बातें की कि उनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ही क्लोज्ड कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही एफिशिएंट होता है, जो उनको इट गिव्स देम रूम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस एटसेट्रा, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हैव बिकम मोर एडवांस्ड एज अपोज टू बाकी सारे जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं और बाकी सारी जो बाकी सारे फाइलम्स हमने सो फार पढ़े हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स में there are specifically 9 classes that we'll be talking about। ठीक है, और इन 9 क्लासेस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल एक वर्टिब्रेट्स के बारे में समझ लेते हैं। So if I start talking about the general feature of vertebrates, the name is derived from the presence of vertebrae। vertebrae क्या है? It's basically a series of
one after the other arranged vertebrae जो हमारी एक vertebral column में present होते हैं. So it's basically a huge column जहां पे one after the other आपकी कुछ vertebrae present हैं. ऐसे organisms जिसमें ये वर्टिब्रे वन आफ्टर द अदर एक वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्म ले लेती हैं, उन्हीं को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. ठीक है, सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रे प्रेजेंट हो या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो वो जरूरी नहीं है. दैट इज व्हाई देयर इज दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग. Just a second. There's a very one important saying. It says all vertebrates are chordates, but not all chordates are vertebrates. ठीक है, सो कॉर्डेट इज बेसिकली अ ह्यूज टर्म. उसके अंदर कुछ और भी एनिमल्स प्लस वर्टिब्रेट्स आते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं दे आर कॉर्डेट्स, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स. कई बार हम लोग इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट कॉर्डेट्स, इसके अंदर लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर आर some protochordates and there are vertebrates. ये बात सही है कि vertebrates जो हैं वो ज्यादा हैं, protochordates का नंबर बहुत कम है, but still we should not interchangeably use these two terms. Vertebrates and chordates are two different terms. Now, like I said, the vertebrates are identified by the presence of vertebrae. This vertebrae forms an important part of the axial endoskeleton. अब एक्सियल एंडोस्केलेटन क्या होता है? तो स्केलेटन जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बहुत ही थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी जब कंपैरेटिव पढ़ोगे तो यू रीड इट इन डिटेल. सो जो स्केलेटन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द क्रेनियम या फिर स्कल. सेकेंड इज द एक्सियल एंडोस्केलेटन. जिसके अंदर आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, एंड द नोटोकॉर्ड एज वेल. ये आते हैं आपकी एक्सियल एंडोस्केलेटन में. एंड देन देयर इज एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, जिसमें आते हैं आपके सारे गर्डल्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक, बोथ द गर्डल्स, as well as बाकी सारी बोन्स जितनी भी आपकी पेरिफेरल बोन्स है, फॉर एग्जांपल द बोन्स ऑफ योर फोर आर्म्स, द बोन्स ऑफ योर लेग एंड ऑल ऑफ दैट. सो ऑल द पेरिफेरल बोन्स. ठीक है, सो vertebrates have a presence of vertebrae or vertebral column sorry, which is a major part of the axial endoskeleton. Vertebrates के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. पहला है that they have a cranium which houses the brain. दूसरा, they have a vertebral column which houses the rest of the nerve cord. ठीक है, तो अब कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स 3 प्लस 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, so it makes them a vertebrate. ठीक है, अब ये कौन सी 9 क्लासेस हैं इनका एक बारी देख लेते हैं. What are these 9 classes? So the first class. मैम प्रीवियस स्लाइड कर दो एक बार प्लीज. थैंक यू मैम. All right. So the first class, so there are 9 classes like I said. The first one is called ostracodermy. Ostracodermy.
Second, just keep some room on the sides, on both the sides if you're making notes, because we have to add a few points here. ठीक है, तो दोनों के आसपास just keep some room, बीच में लिखना बिल्कुल पेज के. So the ostracodermy, we have cyclostomata, placodermy, then the fourth is chondrichthyes, chondrichthyes. The fifth one is osteichthyes. Then you have amphibia, reptilia, aves, and finally the mammalia. ठीक है, अब ये जो 9 classes हैं, there are several terms that I'm going to give you that you have to remember, क्योंकि इनको कई बार अलग-अलग classifications, अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. For example, these first two are also called as agnatha. Agnatha. And these rest of them, these rest 7, are called as gnathostomata. This classification or this grouping is done based on the presence of jaw. I'm not talking about the teeth, okay? I'm talking about the jaw. So in agnathans, there is no jaw. And the word gnathos itself means jaw. So these are the ones in which jaw is present. Okay. Another thing, starting from placodermy up to osteichthyes, these three classes fall under a superclass called as the Pisces. They are the Pisces or the fishes. From placodermy, chondrichthyes, osteichthyes, ये तीनों जो हैं, they fall under fishes. And rest of them from amphibia up to mammalia, they're also called as tetrapods. So this is the superclass tetrapods. Tetrapoda or tetrapods. Now tetra here stands for 4. Pods is for feet. So the ones that have 4 feet, tetrapods. There's another grouping which I've already given you from osteodermy up to amphibia. These are called lower vertebrates. And then from reptilia onwards, they're higher vertebrates. Initially, classification जो दिया गया था, it was given based on the movement from water to land. जो मैंने बताया कि कुछ जो बाकी सारे हैं, they're dependent on water, but reptiles, aves and mammals, they're majorly terrestrial. एक और चीज देखी गई that the lower vertebrates from osteodermy up to amphibia, they do not have amnion. Amnion is like a membrane, it's like a pouch that holds the embryo. So these are called anamniots. And the higher vertebrates are called amniots. And this is because of the presence of
presence of amnion that holds the embryo. ठीक है, इस एमनियन का काम क्या है? ये आपका एम्ब्रियो जो होता है उसको डेसिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन और ड्राई आउट होने से बचाता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन. जब लाइफ जो है वो वाटर से टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव की, तब जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए एक कवरिंग बनी, which is called as the amniotic covering or the amnion, जो कि आपके एम्ब्रियो को होल्ड करती है और उसे डेसिकेशन से बचाती है, ड्राई आउट होने से बचाती है. ठीक है, सो दिस इज अ फीचर ऑफ हायर वर्टेब्रेट्स. ऑल गुड सो फार? यस मैम. Okay. So now here's what we're looking at. Okay. So we'll just quickly run through this particular diagram. Here you can see that they have listed here a few protochordates, the hemichordate, which is now listed, which is now an invertebrate. Rest cephalochordate and urochordate, I've told you, they're protochordates. So initially, whichever was the hypothetical chordate ancestor, वहां से urochordates और cephalochordates divide हुए. Then came the agnathons, जो jawless vertebrate हैं आपके, जहां पे jaw अभी develop नहीं हुआ है. From them, there were two different type of fishes that developed, which were placodermi and chondrichthyes. Chondrichthyes are also known as the cartilage fishes. ठीक है. Then from these fishes, so इनकी lineage अलग अलग हो गई, but then from another ancestral population, they developed highly bony fishes, the most advanced type of fishes, the bony fishes. ठीक है. Then further, from the primitive amphibians, there were two groups now that divided. एक जो modern amphibians की तरह develop हो गए, and there were primitive ones that finally developed as, diverged as reptiles. और इस reptilian ancestor से दो parallel lineages चली. Two parallel, what do you say, evolutions have happened. One that formed the aves and another that forms the mammals. मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा कि दो पैरेलल लीनिएजेस चली और पहले हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन, और मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, भले ही दोनों अपनी अपनी तरह के एडवांस्ड हैं, दोनों का जो फाइलोजेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंशिएशन है, वो बहुत पहले हो गया था. ठीक है, क्यों? जब आप आगे चल के कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे, जो आपका वर्टेब्रेट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा एंड वी मूव टू कंपैरेटिव एनाटॉमी, तब आप देखेंगे कि मैमेलियन और बर्ड्स जो हैं उनके फीचर्स भले एक जैसे हैं, दोनों वार्म ब्लडेड हैं, दोनों अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अच्छे से सर्कुलेशन कर सकते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट है वगैरह वगैरह, बट उनका डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से काफी डिफरेंट है. ठीक है, सो वील सी दैट एज वेल. This figure I have just put to emphasize upon that from a primitive reptile, two parallel and most advanced lineages have developed, which is the mammals and aves. एक एक करके हम सारी, we will talk about each of the branches of this particular tree, phylogenetic tree. एक एक करके हम सबके characteristics पढ़ेंगे और देखेंगे वो कैसे पिछले वाले से advance है. ठीक है, so that's what we are going to do in each of the class. And today we are going to start with the ostracodermy, the first one, this one.